नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ कैबिनेट कमिटीज। इसे देखते हैं। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कैबिनेट कमेटी। तो दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। क्या है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल? सबसे पहला फ्रॉम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, these are extra constitutional. Constitution इसका term नहीं दिया गया. In other words, they are not mentioned in the constitution. However, the rules of business provide for their establishment. So there are two types: standing and ad hoc. The former are of the permanent nature, and while the latter are of a temporary nature. So यहाँ देखते हैं ad hoc committee are ad hoc मतलब कि temporary ad hoc, ठीक है? मतलब ad hoc टीचर भी होते हैं तो ठीक है. Ad hoc committee are constituted from time to time to deal with special problems. They disbanded after their task is completed. तो complete जैसे हुआ उसको खत्म कर दिया जाता है. No, they are set up by the prime minister according to the exigencies of the time. जैसे जरूरत पड़ा टाइम के अनुसार and requirement of the situation. Hence their number, nomenclature and composition varies from time to time. So their membership varies from 3 to 8. They usually include only cabinet ministers. However, the non-cabinet ministers are not debarred from their membership. ऐसा नहीं कि उन्हें हटा दिया जाएगा. They are not only including the ministers in charge of subject covered by them, but also include other senior ministers. They are mostly headed by prime minister. Sometimes other cabinet minister, particularly the home minister or finance minister, also act as their chairman. But in the case of prime minister is a member of committee, he invariably presides over it. They not only sort out issues and formulate proposal for the consideration of the cabinet, but also take decisions. However, the cabinet can review their decision. तो cabinet इसका review कर सकता है. ये हो गया अदर अनदर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. कैबिनेट रिव्यू कर सकता है. यस, कैबिनेट कैन रिव्यू इट्स डिसीजन. So they are an organizational device to reduce the enormous workload of cabinet. ठीक है. They also facilitate in-depth examination of policy issues and effective coordination. They are based on their principle of division of labor and effective delegation, यानी काम को बांट देने का काम करते हैं. और लिस्ट ऑफ कैबिनेट कमेटी यहाँ देखिए. इन 1994 देयर वर फॉलोइंग 13 कैबिनेट कमेटी. तो अभी करंट में हमारे पास टोटल कितना है? 8 स्टैंडिंग कमिटी इन इंडिया. तो ये नेम हो गया. देखा जाए द कमिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल 1961. दे हेल्प रिड्यूस वर्कलोड ऑफ द यूनियन. तो यहाँ देखिए सबसे पहले एसीसी अपॉइंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर गवर्नमेंट पोस्ट. कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन मैनेज गवर्नमेंट रेजिडेंशियल एकोमोडेशन पॉलिसीज एंड एलोकेशन. तो एकोमोडेशन के ऊपर हो गया. कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ओवरसीज इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मेजर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. Cabinet Committee on Investment and Growth, Parliamentary Affairs, Cabinet Committee on Political Affairs, and Cabinet Committee on Security. Now, जो मेजर प्रीलिम्स क्वेश्चन जो बनता है कि क्या ऑल कैबिनेट कमेटी आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा नहीं है. प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट एकोमोडेशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर ये आपको जाता है होम मिनिस्टर के पास. अदरवाइज जितना भी रेस्ट जो 6 है दे आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एकोमोडेशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाय होम मिनिस्टर. तो अपने ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पे आते हैं. तो इसे देख लेते हैं. इतना काम का है नहीं, लेकिन देख लेते हैं. कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया. कमेटी ऑन नेचुरल कैलामिटीज, पार्लियामेंट्री अफेयर्स. तो ये कौन सा है? होम मिनिस्टर. अपॉइंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, कमेटी ऑन एकोमोडेशन, तो ये भी आपका होम मिनिस्टर. कैबिनेट कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कमेटी ऑन ड्रग अब्यूज, तो ये सारा. लेकिन 2013 में आपको ये 10 कर दिया गया. और अगेन वर्ल्ड ट्रेड मैटर्स ये सब हो गया. एट प्रेजेंट 2019 में हमारे पास सिर्फ 8 कैबिनेट है. और ये देख सकते हैं सिर्फ ये आपका पार्लियामेंट्री एंड एकोमोडेशन इज विथ होम मिनिस्टर. अदरवाइज द रेस्ट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ये रहा हमारा कैबिनेट कमेटी. Now function of cabinet committee देख लेते हैं. Political affairs committee deal with the policy matter pertaining to domestic and foreign affairs. First 3 committees are chaired by prime minister and the last one home minister. Of all the cabinet committee, the most powerful is the political affair committee, often described as super cabinet. सुपर कैबिनेट किसको बोलते हैं? सुपर कैबिनेट ये है आपका पॉलिटिकल अफेयर. Now, group of ministers को देख लेते हैं. In addition to cabinet committee, several group of ministers are constituted to look into different issue subjects. Some of these are empowered to take decision on behalf of cabinet, whereas the other make recommendation to the cabinet. So the institution of GOMs has become a viable and effective instrument of coordination among the ministers. These are ad hoc bodies formed to give recommendation to the cabinet on certain emergent issue and critical problem areas. Minister heading the concerned ministry are inducted into the relevant GOM
and when the devices crystallize, they are disbanded. So the second ARC, yani ki Administrative Reform Commission, made the following observation with respect to working of GOMs. The Commission observed that the constitution of a large number of GOM has resulted in many GOM not being able to meet regularly to complete their work, thus leading to significant delays in many major issues. Commission felt that more selective use of institution of GOM would perhaps lead to more effective coordination, particularly if they are empowered to arrive at a decision on behalf of cabinet with time limits they are prescribed for completing the work entrusted to them. The Commission recommended that there is need to ensure that the existing coordination mechanism of GOMs function effectively and helps in early resolution issues. Selective but effective use of GOM with clear mandate and prescribed time limits would be helpful. So we are done with this chapter and we'll continue with the cabinet committee.